morning student. Today I will start acid, base and salt. And yesterday I completed electrolytes, non-electrolyte, type of electrolytes, strong and weak electrolytes and degree of dissociation. Now we will start acid, base and salt. And some concept we have learned in class 10th also, which as you know that about the acid, in 10th class you learned that it has a sour taste. Okay, it is corrosive. It turns blue litmus into red. Okay, this is the general concept, and it is colorless or yellowish. Yellowish or sometimes colorless also. Okay, this is the basic concept whatever you have learned in class 10th. Okay, क्लास 10th में जो आपने पढ़ा है कि इट हैज सोर टेस्ट, इट इज कोरेसिव, जहाँ कहीं भी गिरेगा तो सरफेस को खराब कर देगा। ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, और इस जो कलर इसका होता है वो येलोइश होता है, कलरलेस भी होता है। वो डिफरेंट टाइप की एसिड्स होती हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ हम जानते हैं, एक बेसिक जो हम 10th से पढ़ते चले आए उसमें हम लोग जानते हैं। बेस के बारे में क्या जानते हैं कि बेस क्या होता है, इसके अपोजिट होता है ये। इट हैज़ bitter taste, it is soapy in touch, okay, and it turns blue litmus, red litmus into blue. Okay, and it is colorless mostly. It is mostly colorless. Sometime whitish after some time. Okay, this is the basic concept from the beginning. Class 8, 9, 10 you have learned this about this. And about the salt, what is the salt? When acid equal mole, base equal mole mixed to each other, then what we get? We get salt and water. Salt and water. Okay, and you know the taste of salt, and salt is neutral. Okay, तो ये सारी चीज़ें हम लोग बेसिक रूप से जानते हैं जो हम लोग को बताएंगे, लेकिन अब जैसे जैसे हम आगे की क्लासेस में जाएंगे वैसे वैसे जो है कि हमारे कॉन्सेप्ट और भी गहरे होते जाएंगे और
भी चीज़ें हम एसिड बेस के बारे में जान पाएंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अरहेनियस कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे एसिड बेस के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट concept is Arrhenius concept of acid base and salt। हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट हैं एसिड और बेस को लेकर के, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ देखेंगे पहले Arrhenius concept of acid and base। Okay, it was very easy concept also। First about the acid, what are acids? All those chemicals, all those chemicals or substance which furnish hydrogen ion in aqueous solution, okay, or you can say here proton donor, are acid। Okay, mainly we have to see all those substances which can give H plus ion. For example, you can see here HCl and HBr, HF, H2SO4 and H3PO4 and HNO3, HNO2, all these are the proton hydrogen ion donor। You can see some weak acid also, okay, these are also the hydrogen ion donor, okay। Now you can see through the reaction, if you add H2SO4, then it will form H plus AQ and Cl minus AQ, okay। This way the hydrogen ion in aqueous furnish hydrogen ion in aqueous solution of the acid, you can see here। Now about the base, all those substances which furnish or give hydroxyl ion in aqueous solution, are known as base, bases। Example, you can take NaOH, LiOH, KOH, CaOH whole twice, and DOH whole twice, AlOH whole twice, etc. NH4
These are the bases. Okay, because in aqueous solution it gives OH ion. This is the Arrhenius concept. Something more once again, acids are those chemical substances which furnish H plus ion in aqueous solution are known as acid. Okay, and you see here the some example: HCl, HBr, HF, H2SO4, H3PO4, HNO3, HNO2, CH3COOH, and HCOOH, and these are the acid. And you can see here it gives H plus and Cl minus. Bases are those substances which gives OH ion in aqueous solution are known as bases. For example, NaOH, NaOH, KOH, calcium hydroxide, magnesium hydroxide, aluminum hydroxide, ammonium hydroxide, so on. And next we will see here, if any substance, now some are amphoteric, some are amphoteric. One word we use here, amphoteric. What is amphoteric? Those substances which give both H plus, give both H plus and OH minus are known as amphoteric. Okay, these are known as ampho. Ampho means both. Okay, such you can see H2O, it break into H plus and OH minus. Okay, now we will see some terms associated with acid and base which confuses us during the numerical, solving numerical, that is basicity and acid. Basicity what are number of H plus ions donated by acid in aqueous solution are known as, is known as basicity of that acid. Just opposite concept is this, that acid. You can see here for HCl, basicity is, you can write here basicity 1H plus it can give, therefore 1 H2SO4, there is 2 hydrogen ion, HNO3, 1 and H3PO3 can donate 3, therefore basicity is 3. Okay, now we will see here once again for the base acidity. Next term is the acidity. Okay, acidity. What is acidity? Number of, right here, number of OH and
solution or any reaction is known as acidity of that base. Example you can take here NaOH, it can give only one, therefore basicity is 1. CaOH whole twice, then basicity is acidity is 2. ओके, तो इधर हमने देख लिया कि बेसिसिटी क्या होता है, कितना नंबर ऑफ H+ आयन कोई भी एसिड डोनेट कर सकता है एक्वस सोल्यूशन में, वो उसकी क्या हो गई, बेसिसिटी हो गई। हमने यहाँ पे देखा कि HCl 1 देता है तो इसकी बेसिसिटी 1 हो गई, H2SO4 2 देगा तो इसकी बेसिसिटी जो है 2 हो गई, और HNO3 1 देगा तो 1 हो गई, और H3PO3 3 देगा तो इसके 3 हो गए। अब एसिडिटी टर्म्स उल्टे हैं तो इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी जब हम नॉर्मलिटी मोलरिटी का इक्वेशन लगाते हैं या नॉर्मलिटी को मोलरिटी में या मोलरिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना होता है तो हमें इस टर्म की ज़रूरत पड़ती है, इसे हमें देखना पड़ता है कि क्या एसिडिटी और बेसिसिटी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एसिडिटी और बेसिसिटी का टर्म। और भी कुछ एग्जांपल इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे हम AlOH का होल थ्राइस ले लें तो इसकी बेसिसिटी एसिडिटी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से हमने आई होप देख लिया कि आई होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट अबाउट द एसिडिटी एंड बेसिसिटी टर्म्स। Once again I will repeat, amphoterics are those which can give both H+ and OH-, and acidity is the number of H+ ion donated by acid in aqueous solution is known as basicity. In acid, if it give 1 hydrogen ion, then basicity is 1, 3 hydrogen ion, then basicity will be 3, or 2 hydrogen ion, then basicity will be 2. And in case of base, acidity is the number of hydroxyl ion donated by base in aqueous solution or in reaction. Okay, if it gives 1 OH ion, then acidity will be 1, or 3, then it will be acidity will be 3. Okay, how much hydroxyl ion it will donate? Then now we will see what is the limitation of this concept. Now we will see here some limitations of Arrhenius concept. This concept is valid only for those which can furnish hydrogen ion or hydroxyl ion. One is the most important thing that it is applicable only for those substances which can give H+ or OH- in solution, but not applicable. But there are some substances, which are acid and base, but do not
not give H plus or OH minus in aqueous solution. Ion in aqueous solution. Okay. Still they are acids. तो यहाँ पे this concept is not valid. Is not valid. Applicable. ओके, एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेबल किसके लिए है, जो केवल OH और H प्लस आयन देंगे उसके लिए एप्लीकेबल है, उनके लिए नहीं है जो कि H प्लस OH नहीं देंगे फिर भी एसिड और बेस है, फिर भी वो क्या है, एसिड और बेस है। तो हम यहाँ पे सम एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये तो लिमिटेशन हो गए, दो हमने लिमिटेशन देख लिए जो कि मेन थे। इसमें से हम एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल AlCl3 इज एसिड, ओके, एंड another example is BF3 is acid in nature. NH3 is base, okay. BS3 is base, but they do not give hydrogen or OH ion in the solution. How they are acid or base? What is criteria to decide this being acid or base? We will see later on. Now we will see the next concept of acid and base, that is the Bronsted and Lowry concept. Okay. Now we will see new concept of acid and base, and it was proposed by this concept was given by Johannes Bronsted and English scientist Thomas and Lowry. Okay. According to them, all those substances which donate proton in a reaction are known as acid, and these are also known as protogenic. They are known as protogenic acids, and those who accept proton, or you can say take proton
known as are known as base. You can write here protophilic. ओके, तो किसी भी रिएक्शन में कोई भी प्रोटॉन अगर डोनेट कर रहा है तो दैट इज एसिड नोन एज आल्सो प्रोटोजेनिक, और जो एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन या ले रहा है प्रोटॉन उसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ से जो प्रोटॉन डोनर होगा वो एसिड होगा और जो एक्सेप्टर होगा वो बेस होगा, और जो नए प्रोडक्ट बनेंगे उसके वो कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा NH3 और इसको हमने वाटर में डाला तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे बन गया NH4+ और यहाँ पे OH-। ओके, दिस वन इज द बेस, हाउ इट इज बेस, and this one is acid, how it is acid we will see here. Okay, this is the conjugate acid, and this one is the conjugate base. Okay, this ammonia accept proton, here it is taking proton from this one, and this water donate proton, here H+ is released. Therefore this base ammonia is base according to the Bronsted-Lowry concept, and water is acid. Okay, because it donate H+ to the ammonia which forms H+ ion, NH4+ ion, and after losing hydrogen ion it become OH-. When a base accept proton it become conjugate acid. When acid donate hydrogen ion it become conjugate base. Okay, means base after accepting proton become conjugate acid, and acid after donating proton become conjugate base. Okay, so what is conjugate acid and conjugate base? Conjugate acid is formed by the accepting proton by base, and conjugate base is formed by loss of hydrogen ion from the acid. Okay, one thing is that if Bronsted acid is stronger then its conjugate base will be weaker. ओके, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा, और इसके अपोजिट हो जाएगा कि अगर ये वीकर है दूसरे लाइन में लिख देते हैं, इफ यहाँ लिख देते हैं, इफ Bronsted acid is weak, then its conjugate in base will be stronger.
Okay. In similarly opposite, if ground state base is stronger, than its conjugate acid will be what? Weak. ओके, तो यहाँ पे हमने ये देख लिया एक नया कॉन्सेप्ट, क्या होता है कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, और क्या होता है एसिड, क्या होता है बेस। अगर ब्रोंस्टेड एसिड स्ट्रॉन्गर है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, अगर ब्रोंस्टेड एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड बेस जो होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा। इसके अपोजिट बेस में भी वही होगा कि स्ट्रॉन्गर अगर बेस है तो कॉन्जुगेट एसिड उसका वीक होगा। इस तरह से हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट जान लिया, अरेनियस कॉन्सेप्ट और ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट। अब इसमें कुछ हम लोग जो है कि और भी जानेंगे, और इसके अलावा इसका लिमिटेशन और लिविस कॉन्सेप्ट भी जानेंगे। थैंक यू।